अच्छा ये तो पॉइंट है और नमस्कार, जय हिंद, good morning, Merry Christmas and Happy New Year. Welcome to this session on research methodology. It's a cold winter Saturday morning, and I hope you're all warm in your cozy clothings. So today we'll be talking about how to measure the burden of disease in a community, in a society, in a ward, in a clinic. And we will take some examples from simple examples from real life. So let us start with some basic concepts understanding. So Honorable Vice Chancellor and CEO Dr. Shalya have decided that all the university schools and institutes of Subharti, Swami Vivekananda Subharti University will be amalgamated, who are taking active part in health-related care and research, besides medical, of course, dental college, pharmacy, the physiotherapy, naturopathy, paramedical, and all the disciplines will be amalgamated, and they'll be called as Health Institute, Subharti Health Institute. So the instructions from the CEO office are that everybody belonging to these disciplines will wear white coat in duty hours at least. And it said that those who are not wearing white coat, they don't have white coat of their own, the Dr. Shalya will provide a white coat for them. Okay. So Dr. Krishna, don't worry about the expenditure. Sirf drama kar rahe. Okay. So हमें कोई बताएगा यहाँ पे कितने लोग white coat पहने? How many are wearing white coat? Just quick count. Five. Okay. So 5. So white coat, yes, in 5. And total कितने होंगे हेल्थ साइंसेज में डॉक्टर कृष्णा? रफ एस्टिमेट नहीं, हाँ चलिए इस कमरे में बता दीजिए। चलिए 50. So what does this 50 in the which I have written in the bottom is 50 is the total number of all the persons sitting in this class. So who are these 50? 5 of them are actually wearing white coat. So 5 who are wearing white coat plus 45 who are not wearing white coat. Okay? So this denominator here written in the bottom, it's actually a mixture of those who wear white coat and who do not wear not white. Short में मैं लिख रहा हूँ not white coat. Clear दिख रहा है? Not white coat. Okay. So please keep this in mind. And we are all familiar since I think class 2 or 3, whenever we started our learning arithmetic, we are familiar with this. And you can present to the dean's office like this, that 10%, 5.50 means 10%. ठीक है? ये कट गया इससे, तो 1/10 यानी कि 10%. 10%. परसेंट माने क्या हुआ? 10%. फ्रेंच वर्ड है pour song. 10% यानी सेंट माने 100 और सॉन्ग फ्रेंच में वर्ड है, तो पर 100, ठीक है? परसेंट मीन्स पर 100. ओके. So we are all familiar with this concept, okay, presenting as percent. And what is it, by the way, in arithmetic? What do we call this? 5/50 or 5/100? क्या बोलते हैं इसको? Fraction. Okay, fraction. ठीक है. Ratio. मैडम ने कहा ratio. Any other suggestion? 5 those who are wearing white coat. 50 who are total number of doctors sitting in this class. So what is this called? One option was fraction. Madam said
ratio or कुछ suggestion? What is proportion? Proportion नाम सुना है किसी ने? Proportion, अर्थमेटिक में proportion बोलते थे, ठीक है. Probability word familiar है? Probability, ठीक है. हाँ, thank you Dr. Krishna for 1 out of 10. 1 out of 10. 1 out of 10, हाँ, ठीक है. 1 out of 10 are wearing white coat. So it is a proportion. Arithmetic में we call it proportion, and we can call it probability also. In epidemiology, they call it risk of having heart attack, risk of having corona, risk of having COVID, risk of having diabetes if you have metabolic syndrome, and so on. Okay, so keep this in mind. In this 50 is the total number of people sitting here, and they comprise two groups. Those who wear white coat. So this 5, if I'm allowed to write in different color. So if this is 5 who wear white coat, they are included. So 5 are included in the denominator. Okay. So the denominator contains the numerator. Denominator contains the numerator. So this is everybody in the class, and this is a part of it. So can we write this is a part and out of whole class. Part upon the whole class. Okay. And who are those whole? Whole contain the part. इसको दूसरे the ratio. Thank you. अभी सब टर्म्स में आएंगे, रेशियो, फ्रैक्शन सब करेंगे. हाँ. Thank you. Okay. So who are these whole? They are that part which is present in the numerator, white coat वाले. Plus कौन? जो नहीं पहन रहे. Those who are not wearing white coat. उसको हम कैसे लगते हैं? Rest of it? Rest of the class? Okay. So those who wear white coat plus who do not wear, total is being added in the denominator. Okay. Acha, this is a unique arithmetic or mathematical presentation of the truth or of the data or of the burden of some event. And this has some unique properties. Let's see that. Suppose everybody in this class was wearing white coat. ठीक है. तो 50 पहन रहे थे, 50 हैं, और टोटल 50 भी थे क्लास में. ठीक है. 50 upon 50 कट गया, ये 1 आ गया. ठीक है. एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू परसेंट, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 100% हो गया. तो रिपोर्ट गोज टू सीईओ ऑफिस दैट एवरीबडी 100% of the doctors sitting here are wearing white coat. Wonderful. Excellent, मिल गया आपको. तो 100 या 1 मैक्सिमम हो सकता है. किसी भी इवेंट का अगर हम प्रोपोर्शन दिख रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इट कैन बी HIV पॉजिटिव, इट कैन बी कोरोना पॉजिटिव, इट कैन बी कैंसर, इट कैन बी TB. इफ एवरीबडी हैज TB इन अ वार्ड, ट्यूबरक्लोसिस वार्ड में आप जाइए तो सबको TB तो होगी, तभी तो ट्यूबरक्लोसिस में एडमिट हुए. ठीक है. गायनी लेबर रूम में जाएंगे तो सबको प्रेगनेंसी तो है ही. ठीक है. तो 100 लेडीज आर लाइंग इन द लेबर रूम एंड दे ऑल आर प्रेग्नेंट. तो 100 upon 100. तो मैक्सिमम proportion or percent or probability or risk can be 100% or 1. ठीक है. Everybody has it 100%. मिनिमम क्या हो सकता है? मिनिमम ये हो सकता है कि एक भी कोई, थैंक यू बॉस, एक भी नहीं पहने था क्लास वाइट कोट, तो 0 हो गया. ठीक है. तो 0 का परसेंट भी 0 हो जाएगा. सो द प्रोपोर्शन कैन गो फ्रॉम मिनिमम 0 to 1. इट कैन नॉट बी मोर देन 1. भाई 50 के क्लास में 51 तो हो ही नहीं सकते. ठीक है. सो द प्रोपोर्शन कैन गो फ्रॉम 0 to 1 or 0 to 100% if you want to present in percentage. Okay. So this quality in the mathematics is utilized in doing many calculations, and we'll see that later on today or even later. So please keep in mind that probability or percent can go from 0 to 1. Okay. अच्छा. अब इसको we'll try to
inculcate, understand, internalize this concept with example of an apple. Apple is a great fruit. They say one apple a day keeps the doctor away. And apple gave the Newton the famous name, and he invented the rules of gravity. तो अब इसको जरा clean हाँ करा दें. So we'll use the example of the apple, and our friend Sister Manisha has cut a piece of it. So we'll try to suppose this was the portion wearing white coat. ठीक है, this is a part of the whole class. The whole class is represented by one apple. Okay, उसका एक part हमने ले लिया जो white coat पहने थे. It can be any other event also. आ जाइए सिस्टर, इधर आइए. तो इसको मिटा दी, इसको white को मिटा दी, पूरे को clean कर दिए. ये हो रहा है ऐसा? हाँ हो गया अभी हो गया फिर. ओके चलो ठीक. सिस्टर इसको आप पकड़िए और एक नीचे पकड़ेंगे, ठीक है? और मुझे ये पेन दे दीजिए, पकड़ लीजिए. हाँ. So now I am, instead of number of coats as 5, I am taking a part of that whole apple. ठीक है, यहाँ पे पकड़ लीजिए इसको. So right, so this is the part which belongs to this whole class, whole universe, whole community. ठीक है, पकड़ लीजिए. So okay, so everybody is with us. So in the numerator, in the top, we are having a part of the apple. Part of the apple. एक पोर्शन है, ये सिस्टर ने काटा है, ठीक है? और डिनोमिनेटर में क्या है? होल एप्पल. होल एप्पल है, ठीक है? होल एप्पल. Okay, so this property of representing some data, some information, part in the numerator, those who have that event, it may be it's white coat or having HIV, having hepatitis, having TB, any interest, you want to, number of people who want to vote a particular, party. So part upon the entire population. So in the denominator, we put entire population, and this entire population, इसकी जगह ये वाला एप्पल पकड़िए, ये पकड़ लीजिए. This entire population actually comprises two portions. The part which was present in the numerator, this, plus the rest of it, remaining. ठीक है? तो डिनोमिनेटर में नीचे हमने क्या लिखा? वो पार्ट जो कि हमने न्यूमरेटर में कहा था, व्हाइट कोट जो पहने थे, और नीचे हमने लिखा सबको लिया, और सब में क्या शामिल थे? जो व्हाइट कोट पहने थे प्लस जो व्हाइट कोट नहीं पहने थे. ठीक है, पार्ट प्लस द रेस्ट ऑफ इट. ओके, सो दिस होल थिंग अब यहां पे रखेंगे. होल, ये होल है. एंड इफ यू थिंक डीपली, व्हाट इज दिस होल कंप्राइजिंग? इट इज कंप्राइजिंग of that portion plus the rest of it. So whole can be rewritten as the part plus the rest of it, remaining portion. ठीक है? Okay, इसको एप्पल को हटा लीजिए. इसको you can also write as slightly different version. हाँ, ये बेटा इधर बेटा, बस अभी उतना छोड़ दिए, उधर छोड़ दिए. अच्छा ठीक. So in the numerator, those who have white coat upon those who have white coat plus those who have not. ये भी कह सकते हैं. ये वाली ठीक है, ये पकड़ लीजिए. Those who have white coat upon those who have
plus the rest of the class, those who have not. ठीक, we are with us. ठीक है अभी तक. तो न्यूमरेटर इज कंटेन्ड इन द डिनोमिनेटर. जो संख्या ऊपर हमने लिखी वही नीचे भी लिखी. ठीक है, प्लस द रेस्ट ऑफ इट. So this is very easy. We have been learning it since I think class 2 or 3 in our arithmetics. We call it by various names. The basic arithmetic term for this is proportion. P-R-O, proportion, part of it, portion of it, proportion. Epidemiologist Dr. Bhavna madam will like to call it risk, because she is always worried about risk of having TB, risk of having AIDS, risk of having coronary artery disease, and so on, right? So they want to calculate the risk. It is the same thing. Risk is again same thing, part upon the whole, okay? It is also called probability. So in algebra, they call it, algebra and statistics, they call it probability. Same term, probability. So proportion, probability, risk, percent, it's percent. See, the same thing. Numerator, a portion, which is representing the event of interest or disease or people who have some traits, some white coat, divided by the total containing everybody. Okay. So for this was fine. Now we go to अब हम थोड़ा सा डेविएट कर रहे हैं. सीईओ ऑफिस ने कहा कि उनको ये इंफॉर्मेशन है कि जो लोग व्हाइट कोट पहनते वो डेली काउंट कराते हैं, ठीक है, सरप्राइज चेकिंग करते रहते. हमें ये बताओ कौन नहीं पहन रहा है. ठीक है, आई डोंट रिपीट द इंफॉर्मेशन विच यू हैव गिवन मी इन द न्यूमरेटर. गिव मी समथिंग एक्स्ट्रा यूनिक. ठीक है, तो डिनोमिनेटर में उन्होंने कहा कि आप सिर्फ वो बताइए जो लोग व्हाइट कोट नहीं पहन रहे. ओके, सो नाउ ये वाला मिटा दो बेटा. सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन नोइंग, ये मिटा दीजिए, होल मिटाइए, बस ठीक. ओके, सो पार्ट this portion, those who are wearing white coat, divided by those who do not have. Those who have, उन्होंने कहा कि don't repeat the information, just tell me this: those who have upon who have not, those who have HIV upon those who have not, those who have TB or not, those, ठीक है, those who have white coat upon not. इसको क्या कहेंगे? रेशियो एक होगा. और कोई सजेशन? सो वी आर गिविंग टू यूनिक सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. है जो HIV है, जो नहीं है, जो TB है, जो नहीं है, रिपीट नहीं हो रही. दे आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. मैथ के भाषा में कहें इसको तो इट इज कॉल्ड, और स्टैटिस्टिक्स में जैसे टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट ऑफ डेटा. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? हमारे कम्युनिटी एपिडेमियोलॉजी में क्या पढ़ाते हैं इसको? Any suggestion? Relative risk. अगर आपने आज के क्लास का टाइटल अच्छी तरह से पढ़ा हो तो आप तुरंत बता सकते हैं. जी, odds. You are very close, ma'am, but it's okay. So this unique information where numerator is not contained in the denominator. ठीक है, अब सिस्टर मनीषा फिर से आ जाइए जल्दी से. बस इतना ही रखिएगा. ये वाला मिटा दो बस, ये वाला. तो दिस यूनिक set of information where you present some information about some event or disease or people who wear white coat or red coat or head cap. Here I think three people are wearing head cap. ठंड ज्यादा है थोड़ी. अच्छा, और डिनोमिनेटर में हम कह रहे हैं सो पार्ट अपॉन द रेस्ट ऑफ इट. इस संख्या को, इस एक्सप्रेशन को मैथ में बोलते हैं odds. odds में नोट्स करिए, s हमेशा रहेगा. इट्स अ प्लूरल.
ऑड्स बोलना है, ऑड नहीं। ऑड माने होता है कि आई एम द ऑड मैन आउट, ठीक है, हु इज वेयरिंग ब्लैक कोट टुडे, ठीक है। और मैं वेल्स में था 6 इयर्स, तो वहां पे एक वेल्स का नेशनल गेम है रग्बी। तो रग्बी को बोलते थे वो लोग कि रग्बी इज अ गेम प्लेड बाय मेन विद ऑड शेप्ड बॉल। ऑड शेप्ड बॉल होती है ना ऐसी। रग्बी का कभी गेम देखिए तो गोलाकार नहीं होता, एलिप्सॉइड होता है उसका गेम, ऑड शेप्ड बॉल। तो ऑड नहीं है ये ऑड्स, दिस इज इंग्लिश वर्ड ऑड्स, एस प्लूरल लगा हुआ है, इट्स ऑड्स। व्हाई इट इज प्लूरल, we'll just talk about it. तो यहां पे आपने बताया था डॉक्टर कृष्णा ने कि कितने 5% लोग व्हाइट कोट पहने थे। तो 5% क्या थे, प्रोबेबिलिटी थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वियरिंग व्हाइट कोट इन दिस क्लासरूम वाज 5%. नाउ वी आर डिवाइडिंग दिस इंफॉर्मेशन बाय अनदर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वियरिंग व्हाइट, 10। चलिए 10। तो कितने लोग नहीं पहने थे, 90% नहीं पहने थे, ठीक है। So it's a ratio of two probabilities. ठीक है, 10% is the probability of wearing white coat in this, and 90% probability of not wearing white coat. So because it's a ratio of two probabilities, we always express this mathematical entity as plural. तो हमेशा odds कहना है, s लगाना है. It's not English word odd from Oxford Dictionary. It is odds. तो it is नहीं कहेंगे हम, odds are. तो हम कहेंगे इस क्लासरूम में द प्रोबेबिलिटी ऑफ वियरिंग व्हाइट कोट टुडे इज 10%. प्रोबेबिलिटी इज एक संख्या है, इज सिंगुलर. ऑड्स ऑफ फाइंडिंग व्हाइट कोट इन दिस क्लासरूम आर, तो ऑड्स आर बोलेंगे हम, तो प्रोबेबिलिटी इट्स एंड ऑड्स ऑफ व्हाइट कोट आर, इट्स अ प्लूरल, ठीक है। ऑड्स आर कितने होंगे, 10/90. 0 can be cancelled, 1/9, right? So if you fancy a horse race or some car race also, so in some countries like in UK, they are very fond of listening to the commentary or actually watching the horse race. तो उसमें they use this language, odds. 2 हॉर्स हैं, अगर एक का नाम है क्वीन मैरी और दूसरे का नाम है किंग चार्ल्स सपोज, और किंग एडवर्ड, प्रेजेंट किंग चार्ल्स है, उनको डिसऑनर नहीं करना, तो वो कैसे बोलेंगे, ओ टुडे इन द रेस द ऑड्स ऑफ क्वीन मैरी विनिंग ओवर अनदर हॉर्स आर 1/9. अगर 10 हॉर्सेस हैं तो ऐसे बोलेंगे, 1 विनिंग 9 नॉट वियरिंग, ठीक है। अच्छा, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट सो फार, लेट अस डू एन एक्सरसाइज. इसको पूरा वाइट करिए. सो विल डू द सिंपल मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक. तो अपने कैलकुलेटर निकाल लीजिए आप, एंड विल बी डूइंग कैलकुलेशन ऑफ सेट ऑफ, आई विल गिव यू प्रोबेबिलिटी एंड यू विल डू कैलकुलेट द इट्स ऑड्स और दी ऑड, इसको मिटाने का, ठीक है। और उससे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन इमर्ज होगी, प्लीज टेक नोट ऑफ दैट, ओके। आप इधर आ जाइए, मैं इधर लिखता जाऊंगा। तो इधर हम लिखेंगे, आई विल राइट द सम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यू हैव टू गिव मी द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट एंड देन, अच्छा ऐसा करते हैं, क्लास को विल डिवाइड इनटू 2. दिस साइड विल डू कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड दिस साइड विल कैलकुलेट द ऑड्स, ठीक है। हाउ अबाउट दैट, ठीक है। सो ये डेटा है, इसका प्रोबेबिलिटी का शॉर्ट में PR लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी चलिए लिख देते हैं, और ऑड्स बताने हमें, ठीक है। हम डेटा दे रहे हैं, 1 out of 1000, 1 out of 1000 प्रोबेबिलिटी बताएगा कोई, यहां पे प्रोबेबिलिटी ग्रुप, प्रोबेबिलिटी बताइए कितनी है, नहीं 1/1000. अरे अभी तो कहा हमने, पार्ट अपॉन होल. 1 इज द इवेंट, टोटल डिनोमिनेटर क्या है 1000, तो 1/1000 इज द प्रोबेबिलिटी. ऑड्स ग्रुप, ऑड्स कितना है बताइए,
1 very good 9 9 9 वेरी गुड ठीक है अच्छा कोई जिन्हें इसका कैलकुलेटर से वो भी एक्चुअल वो निकाल लेगा 1 डिवाइडेड बाई 999 ठीक है यहाँ बता दीजिएगा फिर ठीक है ओ थैंक यू 0.001 ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं 1 out of 100 probability 1 by 100 so simple odds 1 over 99 कितना आ गया 0.01 गुड 1 out of 10 1 out of 10 probability 1 over 10 odds 1 over 9 कितना आएगा 1 over 9 0.101 ठीक है एक और जस्ट फॉर एग्जाम्पल 1 over 5 5 में 1 को इवेंट है एड्स है चाहिए मान लीजिए 1 over 5 तो यू कंटेन एवरीबडी डिनोमिनेटर में ऑड्स कितना होगा 1 over 4 ओके और ये कितना आएगा 1 over 4 0.25 ठीक है सो व्हाट इज हैपनिंग एज दी यहां से चलते हैं ठीक है 1 over 5 यानी कि 20% ठीक है 20% बहुत कॉमन कंडीशन है कोई चाहे HIV हो हेपेटाइटिस हो कोरोना हो ठीक है तो अगर कॉमन कंडीशन है तो प्रोबेबिलिटी एंड ऑड्स आर डिफरेंट ठीक है सो फॉर अ कॉमन इवेंट odds and probability are different 1 over 4 is different 1 over 4 क्या हुआ 25% ठीक है 1 over 5 क्या हो 20% 20% 25% से बहुत अंतर है भिन्न है ठीक है इट्स मीनिंगफुली डिफरेंट अच्छा 1 over 10 कितना 10% ठीक है 10% इवेंट है तो 10% इवेंट में 1 over 10 एंड 1 over 9 थोड़ा सा अंतर है 0.1 का ठीक है 0.1% है थोड़ा सा डिफरेंट लेकिन नहीं 1 over 100 में 1 over 100 या 1 over 99 ऑलमोस्ट सिमिलर है ठीक है रेयर और इवेंट हो गई तो ऑलमोस्ट सिमिलर 1 over 1000 1 over 99 probably doesn't make a difference तो एरर हो गई डेटा कलेक्शन में एरर हो सकती है so as the event becomes less and less the probability and odds become closer to each other ठीक है so this point should be kept in mind for rare events odds and probability are nearly similar right but when the disease becomes common how common commoner than 10% so 10% is the cutoff ये देखिए this is a very important fact in epidemiology classes they teach it as rare disease assumption तो 10% से कंडीशन जो रेयर होती है उसको रेयर डिजीज कहते हैं स्टैटिस्टिक एपिडेमियोलॉजी में एंड देयर आर सम मैथमेटिकल assumptions based for many calculations it's called rare disease assumption so less than 10% is considered rare and why because the odds and probability are very similar so in many statistical calculation we calculate the odds like log odds in logistic regression we don't calculate probability we only calculate log odds so log odds for rare disease are similar to actual probability okay so I hope you have understood this इसको क्लीन कर देते हैं इसको हाँ ये पूरा क्लीन कर दें ठीक सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड्स एंड प्रोबेबिलिटी इज इसका ढक्कन लगा देंगे concept of odds and probability is clear with this example of apple एक मिनट आ जाइए यहाँ पे सर तार निकला तो नहीं वो पूरा एप्पल उठा दीजिए but just to recap in the concept of proportion or percentage we took ऐसे करिए we took the whole apple in the denominator right part upon the whole contained the numerator ठीक है in another concept ऐसे हाथ करिए the part and the rest of it were two separate
two separate pieces of information. Those who have AIDS, those who do not have AIDS. Those who have white coat, those who do not have white coat. Those who have head cap, those who do not have head cap. They are mutually exclusive. दो अलग अलग हैं, परस्पर परस्पर क्या कहेंगे हिंदी में, बहुत अच्छा वर्ड क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को क्या कहेंगे, अलग 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 भिन्न है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सही समझी है तो एक अब क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसको धर्म से नहीं मत जोड़िएगा। इफ वी अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट देन प्लीज टेल व्हाट इज दिस एंटिटी, आत्मा अपॉन परमात्मा। कोई धर्म का इससे संबंध नहीं है, इसको बताइए क्या है ये। पहले ये प्रोबेबिलिटी ग्रुप बताएगा ये क्या है, फिर ऑड्स ग्रुप। प्रोबेबिलिटी है, पक्का लॉक किया जाए। प्रोबेबिलिटी ग्रुप कह रहा है प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, ऑड्स ग्रुप, आर यू एट वेरिएंस, आर यू एट ऑड्स विद दिस कॉन्सेप्ट सर? What is your concept? I'm not asking your personal liking or disliking about God and not God. It cannot be called odds. It cannot be called odds. Any कुछ दूसरा कोई व्यू पॉइंट है? कोई जो ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता? परमात्मा is also an आत्मा. तो देखिए, Not separate. अगर आप भगवान को मानते हैं, आस्तिक हैं, तो दूसरे इसको बंद कर। अगर आप मानते हैं तो परमात्मा है आत्मा प्लस परमात्मा, ठीक है, ओके। So numerator is contained in the denominator, hence it is a probability. Dr. Krishna and his group is correct. However, if you do not believe in the existence of God, you are an Gnostic, atheist, non-believer, disbeliever, ठीक है? तो क्या है? तो आत्मा एक अलग एंटिटी है और गॉड एक अलग एंटिटी है। जो भी है हम नहीं मानते, है कुछ लेकिन मैं नहीं मानता। Then these are odds. तो ये आपके पर्सपेक्टिव पे, आपके बिलीफ पे डिपेंड करता है। अरे आत्मा अलग चीज है, हम भगवान को नहीं मानते, आत्मा दूसरी चीज है, परमात्मा दूसरी चीज है, हमें आई डोंट बिलीव इन दैट। तो दे आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थिंग्स, सो दे आर ऑड्स, ठीक है? ओके, लेट्स नाउ गो टू द एक्चुअल थिंग। ये माने कि जो आत्मा है वो परमात्मा भी इंक्लूड है, जो ठीक है, चलो, okay, with this we go to the, so we have done the exercise on apple and I hope the concept is clear. So my teacher in epidemiology in the School of Public Health, North Carolina, taught me this, that whenever you have think of incidence in prevalence, think of a pool of water, a pond, a pool or bathtub. हाँ, उसको बेटा मिटा दीजिए जरा, उसको फिर क्लीन करिए, उसमें फिर लिखना है कुछ अभी, तब तक इस पे रहेंगे। तो इसमें आप देखिए, देयर इज अ पूल ऑफ वाटर, ठीक है? वाटर इज कमिंग फ्रॉम द रेन से आ रहा है वाटर, ठीक है? हो सकता है कुछ ड्रेन भी हो आपस में, उससे भी आ रहा होगा, ओके? सो प्रेवलेंस इंग्लिश का वर्ड है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और अदर डिक्शनरीज यूज द वर्ड प्रेवलेंस, टोटल डिजीज और सम प्रॉब्लम प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, प्रिवेलिंग इन द कम्युनिटी, सोसाइटी, वर्ड प्रिवेलिंग, ठीक है? तो प्रिवेलेंस, सो यू टू इंक्लूड एवरीबडी। एवरीबडी मीन्स जैसे डायबिटीज कुछ लोगों को आज हो रही है, कुछ लोगों को 10 साल से चल रही है, कुछ लोगों को कैंसर आज हुआ, कुछ लोगों को 10 साल से कैंसर है, तो एवरीबडी इज काउंटेड, दैट्स कॉल्ड प्रेवलेंस। न्यू केसेस फ्रेशली अकरिंग एज वेल एज ओल्ड केसेस। तालाब में पहले भी थोड़ा सा पानी था और उसमें नया पानी और बरसात से आ गया, वो बोर्ड चाहिए बेटा, बोर्ड चाहिए अभी थोड़ा, ठीक है? सो दिस इज प्रेवलेंस, everybody is included, total burden of a problem prevailing in the community, okay? Fresh cases as well as old pre-existing cases or existing cases, ठीक है? तो एक बाथटब का एग्जाम्पल हमारे टीचर देते थे ऐसे,
तो बाथ टब में पानी यहां से आ रहा है टैप से, ये इनफ्लो है, इन, एक ड्रेन है उससे निकल रहा है, आउट, आउट गोइंग, इनफ्लो, इनकमिंग, इनफ्लो और इनकमिंग, इनफ्लो कह लीजिए, ठीक है। बाथ टब में थोड़े क्रैक हैं, थोड़ा सा पानी लीक भी कर रहा है, थोड़ा पुराना हो गया, ठीक है। इस समय एट अ गिवन पॉइंट एंड टाइम जो टोटल वाटर भरा है, दैट इज टोटल बर्डन ऑफ डिजीज ऑफ प्रिवेलिंग इन द कम्युनिटी, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रीवेलेंस, प्रिवेलिंग तो प्रीवेलेंस, ठीक है। प्रीवेलेंस में देखिए कौन कौन है। प्रीवेलेंस में अगर दो कलर से कर दे, कुछ पहले का पानी था भरा हुआ था कल का, और कुछ आज फ्रेश भरा अभी टैप जब खोला आपने, माने कि कुछ नए डिजीज हुए, कुछ पुराने कुछ नए, ठीक है। तो टोटल, तो न्यू प्लस ओल्ड, न्यू प्लस ओल्ड, ठीक है। प्रेवलेंस में हमने क्या करा था कि टोटल नंबर ऑफ दैट डिजीज, टोटल जो भी डिजीज है अपॉन अपॉन द टोटल पॉपुलेशन, अपॉन द होल पॉपुलेशन, ठीक है, होल। तो टोटल तो न्यू जो वाटर आ रहा है, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट का अगर एग्जांपल लें, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ अ हॉस्पिटल, सो सम पेशेंट्स आर बीइंग एडमिटेड थ्रू कैजुअलिटी, others are coming through OPD. थर्ड, कोई और थर्ड बता सकता है कहां से आ रहे हैं जो कि इस पूल में ऐड हो रहे हैं? गायनी से कोई आया है, ऑब्स्टेट्रिक्स से कोई आया है, ऑब्स्टेट्रिक्स से? अरे भाई, हॉस्पिटल के अंदर ही बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, लेबर वार्ड में, ठीक है। तो न्यू बॉर्न फ्रॉम लेबर रूम, ठीक है, दे आर एडिंग, तो दे आर एडिंग टू दी होल पॉपुलेशन, तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है उससे, डिनोमिनेटर तो बढ़ ही रहा है ना, ठीक है। अच्छा, आउटगोइंग क्या है, जो लीक का एग्जांपल दे रहे हैं, कुछ आधे रास्ते आए, फिर वो नाराज हो गए कि आयुष्मान यहाँ नहीं चल रहा है, दूसरे हॉस्पिटल जा रहे, लामा हो गया, लेफ्ट अगेंस्ट वेट, कुछ की बेचारों की डेथ हो गई, डेथ को ऐसे करते हैं, डेथ हो गई कुछ को, ठीक है। कुछ क्योर हो गए, क्योर हो गए फिर वो चले गए, कुछ क्योर हो गए इसलिए चले गए, कुछ डेथ हो गए, कुछ लामा हो गए, कुछ दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गए, कुछ आईसीयू में शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो दिस पूल इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, सो द प्रिवेलेंस ऑफ एनी डिजीज will be constantly changing depending on how and how much of people are being added in the form of new birth, in transfer from other hospital, and how many are going out in the form of death, cure, shifting, right? So keep this in mind. The prevalence of a disease in any community, in any ward, in any hospital unit is constantly changing depending on how patients are coming and how they are going out. They may be getting cured, they were dying, they are shifting to the hospital. Okay, so it's a constantly changing phenomenon. अच्छा, तो ये think of prevalence and incidence like a pool of water. So prevalence, word from English language, it's a proportion. We have learned proportion. What is proportion? Number of events upon the entire population. If there is some problem, just let me know. Otherwise, we'll just go quickly. Part upon the whole apple. Okay. Numerator is contained in the denominator. So it can be from 0, nobody has it, to maximum 1. Everybody has it, 100%, 0 to 100%. And this 0 to 100% is used in many calculation in statistics. 0 to 1 probability, right? When we calculate odds, log odds, and relative risk, etc. Okay. So these are its synonyms: proportion, prevalence, cumulative incidence, pretest probability. So when we talk of diagnostic test evaluation, there's a methodology, and we shall discuss it in detail. It's called diagnostic test evaluation. Whenever a new test comes in medical field, we have to exercise some testing. It's called diagnostic test evaluation. We calculate sensitivity, specificity, likelihood ratio, probability, pre-test, pre-test odds, post-test odds, and so many things. So that in their terminology, it's called pre-test probability. What is the probability of disease prior to doing my test?
It's called pre-test probability. Okay, same as prevalence. So prevalence can be of two types at one given point in time. So on the day, on say 1st of January, you want to calculate total problem. That's called point prevalence. At this point in time, we can also have a period prevalence over 1 year period, over 1 month period, over 1 day period, depending on what disease you're in. Newborn, I think they will talk in first hour of the birth, neonatal units में hour or days करेगा important कहीं day. ठीक है. Ratio, somebody has said ratio. So what is a ratio? So ratio is a fraction where numerator is not contained in the denominator. So in this, by this definition of maths, odds are a ratio. It's a ratio of two probabilities, those who have upon those who have not. ठीक है. तो रेशियो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों मेल है या फीमेल है, दोनों नहीं हो सकते, ट्रांसजेंडर नहीं है, अलाइव है या डेड है, क्योर्ड है नॉट क्योर्ड है, यू आर हैप्पी और सैड, यू कांट बी बोथ एट वन टाइम. ठीक है. तो ऑल दिस आर रेशियो, एग्जांपल ऑफ रेशियो दैट टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ओके, ठीक है. रेशियो में दोनों एक्सक्लूसिव है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दो अलग भिन्न चीजें हैं. इंसिडेंस क्यूमुलेटिव इंसिडेंस होती है, एंड देन इंसिडेंस डेंसिटी. ये इंसिडेंस डेंसिटी थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा डेंस है, एंड वी डू इट लेटर. We have to understand how it's calculated. So let's just leave it for the time being, but just keep in mind that incidence can be calculated as incidence density in terms of person years at risk. तो जो आप देखते हैं, डेटा देखते हैं कि कैंसर का एनुअल इंसिडेंस 100,000 पॉपुलेशन, यूजुअली 100,000 में कैलकुलेट करते हैं. 100,000 में 40 women per 100,000 population in city of say Delhi have breast cancer per 1,000 years per year. So it's a person years concept. Rate is again a unique way of presenting your data, but time must come in the denominator. जैसे कार की स्पीड 40 miles per hour और हार्ट रेट और इज 72 बीट्स पर मिनट. तो जहां पर आ जाए डिनोमिनेटर में, जहां टाइम आ जाए, चाहे वो सेकंड, मिनट्स, आवर्स, उसको हम कहेंगे. ठीक है. लाइक स्पीड ऑफ अ कार सोच लीजिए, हार्ट रेट सोच लीजिए, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट. ठीक है. तो रेट में क्या है, टाइम इन डिनोमिनेटर. हार्ट रेट 40 पर मिनट, 20 पर मिनट. ठीक. तो जहां पर मिनट कहते हैं, पर आवर, दैट बिकम्स अ रेट. ओके. तो रेट में डिफरेंस आ गया, रेट और रेशियो में. odds हम लोग सब समझ गए. those who have, just to recap, those who have that event upon have nots, they are two mutually exclusive, and because it's a ratio of two probabilities, we always express as plural, we always put s at the end. odds are, probability is, odds are. ठीक है, याद रहेगा. probability is and odds are, odds plural है. Part upon the rest of it, and if you want to be more mathematical, this is how you express it. P is the probability and odds are probability of that event upon 1 minus P. ये इसमें कोई समझने में मुश्किल तो नहीं हो रही? P upon 1 minus P कोई एक्सप्लेन करेगा? आप बताएंगे कैसे ये करा? 1 minus P कैसे आया? आइए, आ जाइए फ्रेंड, प्लीज come and explain. If you have understood the apple example, then I'm sure you can do it. ये 1 minus P कैसे आया? यहीं पे आ जाइए, यहाँ पे कैमरे पे आइए, कैमरे पे. So your name please? Dr. Hema. Dr. Himani is going to explain. थोड़ा सा उधर जाइए, ये दिखता रहे. हाँ, okay. So she is going to explain. Odds में हमने पार्ट P तो लिया, probability जो परसेंट, जैसे परसेंट थी, 10% व्हाइट कोट पहने थे और 90% नहीं पहने थे. तो ये 1 minus P कैसे आया डिनोमिनेटर में? ठीक है, बाइक से करिए. तो 10% वर वियरिंग, 90% नॉट वियरिंग. तो 90 कहां से आया? टोटल थे 100 minus 9, 100 minus 10. So that is 1 minus P. Okay. So simple arithmetic, and with simple algebra you can do the reverse of this. Probability would be equal to odds upon 1 plus odds. So if you are given one quantity, आपको किसी पेपर में आपने पढ़ा, odds दिए हुए, तो you can convert into probability. ठीक है. और and if you are given probability, you can calculate odds. ठीक है. Thank you. अगर बीच में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा. अच्छा, having understood the concept of odds, then it's very easy to figure out
what will be the odds ratio. आपने मान लीजिए निकाला odds of having HIV in people who have some habits, injection, IV drug users, ठीक है, उसमें कुछ probability होगी, odds होंगे of getting HIV, probability in people who are exposed to IV drug use and sharing the needles, ठीक है, वो आपने कैलकुलेट कर दिया, उसको आपने यहां लिखा odds 1, ठीक है। आपने दूसरा ग्रुप लिया, नॉर्मल हेल्दी थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स, डेंटल स्टूडेंट्स ले लिए जो आर नॉट प्रैक्टिसिंग ड्रग यूज, उनमें देख लिया कितना HIV है, उसका ऑड्स सेकंड ग्रुप का हो गया, डिवाइड वन ओवर द अदर, यू विल गेट द रेशियो ऑफ टू ऑड्स। रेशियो ऑफ टू ऑड्स विल बी कॉल्ड, रेशियो ऑफ टू ऑड्स को क्या कहेंगे, ऑड्स रेशियो, OR, ठीक है। ऑड्स रेशियो इज ऑड्स इन वन ग्रुप अपॉन ऑड्स इन अदर ग्रुप. So odds in those who are exposed to some habits, exposed habit of, say, riding motorbike without a helmet. That's a habit. That's an exposure. Okay, thank you. ठीक है, उसमें हेड इंजरी का क्या इंसिडेंस है? डॉक्टर कृष्णा इमरजेंसी के चीफ हैं, so he often gets people who have been hit by a truck and they were not wearing helmet. So what's the probability of severe head injury in those who without helmet upon those who have helmet? ठीक है. So we can calculate odds ratio. So where can we calculate odds ratio? Actually, you can calculate in all types of study designs. But in case control study, we are only allowed to calculate odds. We cannot calculate risk. Why? Because in selecting the cases and controls, we are fixing or we are deciding on the whether they have the disease or not. So it is fixed. ठीक है, केसेस लेते हैं, उस केस कंट्रोल में those who have say HIV, those who have head injury, those who have TB, those who have burn injury, ठीक है, and controls those who do not, ठीक। तो because of that conditional probability of selection of cases in case control study, we can only calculate odds and hence can compute OR. In case control study we cannot calculate any. Sir, so mic diye sir ko, mic diye sir, mic diye sir, very important. Sir is a very learned, erudite physician in our group. Sir, please value your opinion. Issue applies in rare diseases or rare drugs. Sure. Sure. Yeah, so odds can be calculated in all, but in case control, I'm saying in case control study अगर आपने करी है, study design के कई types हैं, we'll take it in detail, but one of the types is case control study. Right. So in case control study, in case control, we can only compute odds and odds ratio. We cannot calculate risk. We cannot calculate relative risk. We cannot. ठीक है? अच्छा. Odds और risk में क्या relationship है? This is shown in this diagram. अगर ये dark करेंगे तो you can see, ये front वाली light थोड़ी dark करिएगा. इस light को dark कर सकता है क्या? हाँ. So we have already seen this in that example of 10%. ठीक है, तो when disease is less, हाँ बस ठीक है, okay. So ये दो लाइन है, relative risk is being depicted here as yellow line and odds ratio is being depicted as red line. Okay, so if disease is less 0.1 यानी कि 10%, as we saw in that example, less than 10%, odds and risk are same, odds and probability are same. So odds ratio and risk ratio are also well similar. But when disease becomes commoner than 10%, then they become different. Okay, so that's being shown here. So 10%, this is the ratio. Up to this, the yellow line and red line are overlapping each other, meaning thereby the odds ratio and risk ratio are more or less the same. However, when the disease becomes commoner, then the red line here goes up. So red line is odds ratio. So odds ratio exceed than the relative risk. Excuse me. So odds ratio is a good estimator of relative risk, provided disease is common. Disease is rare, less than 10%. Okay, less than 10%. उस एग्जाम्पल में देखा था ना, 10% के नीचे odds probability समान थे, तो इसलिए odds ratio and risk ratio भी समान होंगे, equal होंगे, similar, very similar. And another condition is that relative risk should also be less than 3%. So in such situation, relative risk
and odds ratio are exactly similar. So if you have done a case controlled study and computed odds ratio, then you can say, if this is my odds ratio, disease is rare. So I figure out, I assume, I surmise that the relative risk would also be nearly similar. I cannot do a prospective cohort study requiring 10 years of follow-up. But with my case control study, with my odds ratio, I reckon that it will be nearly similar because disease is so rare. Okay, that's allowed. Otherwise, odds overestimates the true risk. ठीक है. Relative risk क्या है? Relative risk, also called risk ratio, both presented by the acronym RR. Relative risk or relative ratio, same, RR. So how do you calculate? Calculate the risk in one group, call it R1, calculate risk in another group, R2, divide 1 by the 2, and you get relative risk ratio. Risk in group who are smoker, risk of lung cancer who are smoking, risk of tuberculosis who are smoking, divided by risk of lung cancer who are non-smoker. Risk of 1 upon risk of 2 becomes risk ratio or RR. Where can we compute RR? Only in prospective follow-up study, because you had the opportunity to detect the real risk of the disease. So you, on day 1, on the inception of the follow-up study or cohort, you take people who are free from that illness and then you follow over time. तो आपने 100 स्मोकर्स को ले लिया, कुछ नॉन स्मोकर भी रहे होंगे इसमें, पूरा ग्रुप को ले लिया, 10 साल उनको फॉलो अप किया, गांव में हर साल गए, एक बार उनका फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, ठीक है, 4 सीटी भी करना कर लिए, उसके बाद देख लीजिए कितने को लंग कैंसर हुआ, कितने को टीबी हुई. So you are calculating the actual risk by this follow-up study, and then you can. So in a follow-up study, you can calculate risk and risk ratio. Okay. In randomized trial, which is also a very special type of follow-up. So please keep in mind, all randomized trials are a type of follow-up. You take the people who are free from that event, and then you follow. You give some intervention. Maybe it's a drug treatment for blood pressure, for headache, from corona, or some surgery for appendixectomy or for cholecystectomy, and then you follow them over time. And then you, at the end, decide whether early cholecystectomy was better or late cholecystectomy. Lap appendix was better or open appendix was better. So you compare the outcome in the two groups. Randomized trials are all follow-up studies, and therefore you are allowed to calculate the relative risk. ठीक है. Odds and relative risks, they are relative measure. ठीक है. Relative measure कैसे? Odds of 1 means no change in odds. इस concept को I'll try to explain by 2 examples. One from my own mother going to ICU, and another cricket match between India and Pakistan. तो इसको थोड़ा clean कर दें बस. So my mother was very sick. She had septicemia. So anesthesia head came and he said, Anurag, we have to take her to ICU and put on ventilator. So I asked, sir, what is the probability of my mother coming out? He said 50-50. 50-50 means 50% chance है कि mother ठीक रहेंगी, 50% chance है नहीं. Next day she left us. So 50-50 is a common concept that we use in clinical practice. एक लेडी आती हैं, उनको मान लीजिए कोई हार्ड लंप है ब्रेस्ट में या माउथ में अल्सर है, और उनके फैमिली पूछते हैं कि क्या चांस है डॉक्टर साहब कि कैंसर है कि नहीं है. आप कहते हैं 50-50. अभी तो भाई बायोप्सी करेंगे, सब करेंगे, चेक करेंगे, लेकिन 50-50 चांस है. माने 50% चांस है उनको कैंसर होने का, 50 नहीं. ठीक. ऐसे आईसीयू में आप अक्सर बताते होंगे, काउंसलिंग करते होंगे पेशेंट रिलेटिव्स को, भाई इस पेशेंट सीरियस है, बच्चा शायद बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता, करीब 50-50 है संभावना. ठीक है. तो 50-50 से सब फेमिलियर है, 50-50 कंसेप्ट. तो एक तो था मदर का. दूसरा क्रिकेट मैच जब होता है, और मैच सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इंडिया में जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, तो हमारे जो क्रिकेट फैन है भारत के, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच हो रहा है. ठीक है. हाँ, अब ये लाइट जला लीजिए, अब लाइट जला लीजिए. ठीक. तो लोग टी स्टॉल पे, पान शॉप पे, ओटी में, आईसीयू में, हर जगह ना व्हाट्सएप करते रहते हैं, भाई कौन जीतेगा. ठीक है.
तो आप कहते हैं 50-50। भाई इस बार इंडिया की टीम भी बहुत स्ट्रांग है और उधर इमरान खान और जो सीनियर थे वो चले गए, निकल गए वहाँ की टीम से, तो करीब 50-50 हमारे विजय। तो 50-50 के क्या माने हैं? कोई बताएगा, कोई यंग क्रिकेटर या क्रिकेट लवर? Odds one. 50-50 when we say, what does it mean actually? Equal chance of losing one. इक्वल चांस। अच्छा, मतलब अगर हम 100 मैच खेलें, इफ वी प्ले 100 मैचेस, 50 में इंडिया जीतेगा, 50 में पाकिस्तान जीतेगा, ठीक है? तो 50/51 हो जाएगा, यानी कि मैच ड्रॉ हो जाएगा, कोई विन नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, तो मैच ड्रॉ हो गया। ड्रॉ माने ना कोई विनर रहा ना कोई लूजर रहा, बराबर का, ठीक है? अच्छा, तो अगर हम कहें कि रिलेटिव रिस्क 1 है, सिगरेट आप पीजिए तो आपको 50% चांस है लंग कैंसर का। स्मोक, इफ यू एंजॉय स्मोकिंग, कुछ लोग एंजॉय करते हैं इसलिए पीते हैं इसको, ठीक? इफ यू एंजॉय स्मोकिंग देन यू हैव 50% चांस ऑफ गेटिंग लंग कैंसर। इफ यू डू नॉट एंजॉय स्मोकिंग देन यू ऑल्सो गेट 50%, सपोज, ठीक है? तो 50/50 क्या हुआ? 1 हो गया, ठीक है? तो you might as well live this life with the fun of having smoke, क्योंकि उतना ही चांस तो बिना स्मोक के भी लंग कैंसर होना ही है, इतने पॉल्यूशन में आप रह रहे हैं, ठीक है? तो 50-50 माने क्या हुआ? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिजीज सेम विद सम एक्सपोजर विद सम फैक्टर, in presence of that factor as well as in the absence of that factor, ठीक है? तो 51 है, ना वो इंक्रीज कर रहा है रिस्क, ना वो डिक्रीज कर रहा है, मैच इज ड्रॉ, ठीक है? अच्छा, अगर हम कहें कि भाई 70% चांस है इंडिया जीतने का और 30% है पाकिस्तान जीतने का, 70/30 या 7/3, अगर 10 मैच खेलेंगे वो लोग, 10 मैच खेले तो उसमें 7 में भारत जीतेगा और 3 में, तो ओवरऑल विनर कौन होगा? इंडिया होगा। अगर हमने ये कोई टेस्ट लगाया और 70% चांस आया उसमें कैंसर होने का और 30 हुआ कैंसर नहीं होने का, तो कैंसर की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। अगर हम स्मोक करें तो हमें लंग कैंसर 70% में होता है और ना स्मोक करें तो 30 में होता है, ठीक है? तो 70/30 कितना हो गया? 2 पॉइंट समथिंग कुछ हो गया ना, ठीक है? अच्छा, यानी कि रिलेटिव रिस्क कितना हो गया? 2 पॉइंट समथिंग। तो अगर हम स्मोक करें तो हमारा लंग कैंसर होने की संभावना दुगनी हो जाती है। तो यू माइट एज वेल स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग बिकॉज माई रिस्क ऑफ गेटिंग लंग कैंसर डबल्स if I smoke compared to if I do not smoke. Okay, so I should refrain from smoking. अच्छा, अगर हम ये कहें, इसको थोड़ा सा मिटा, अगर हम ये कहें कि कोविड वैक्सीन आप लगवा लीजिए और 3 डोज लगवाइए, प्रिवेंटिव वाली भी लगवाइए, तो आपके अगर वैक्सीन लगी है, 3 डोज है, वैक्सीन लगी है तो 1% चांस होने का कोरोना का है, और वैक्सीन नहीं लगी है, नो वैक्सीन, तो ड्यूरिंग नेक्स्ट 3rd वेव ऑफ कोरोना देयर इज 10% चांस ऑफ कोविड, ठीक है? तो 1/10 क्या हुआ? 1/10 यानी कि 0.1, यानी कि लेस देन 1, ठीक है? तो RR ऑफ 1 माने क्या हुआ था? 50/50, मैच ड्रॉ हो गया था। ना वो रिस्क फैक्टर है, ना वो हानिकारक है, ना वो लाभदायक है, ऐसा कह सकते हैं। इट्स नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग योर प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट डिजीज। सो RR ऑफ 1 मींस इट इज न्यूट्रल, नो इफेक्ट। RR 70/30 था, मोर देन 1, it's a risk factor, it's a risk factor, it is increasing your risk, you should refrain from smoking, okay? RR ऑफ ये वाला वैक्सीन लगवाई हमने कोविड की, तो
0.1 यानी कि लेस देन 1. What is it called? वैक्सीन हेल्पफुल है कि हानिकारक है कि प्रोटेक्टिव है? प्रोटेक्टिव है. So यही टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं whenever we are evaluating relative risk and odds ratio. ठीक है? It's a comparison of two probabilities. So RR of 1 means it's neither increasing nor decreasing the risk. No effect. RR greater than 1, it is increasing the risk. It's a risk factor. RR less than 1, it's protective, preventive. That's why we get our children polio vaccine, BCG vaccine, smallpox vaccine, now corona vaccine. They're all preventive. So in vaccination trials, immunization studies, all protective mechanisms with lifestyle vaccination, we talk of prevention. So RR should be less than 1. Okay? Less than 1. And in increasing risk, 1 to 1. So have you understood this concept? So this is one way of understanding odds and probability. Another way I like to talk is doing mental math. In our class 4 or 5, we were taught that if you divide any number by 1, if you divide any number by 1, it remains the same. Okay? So 10 divided by 1 is 10. 100 divided by 1 is 100. Okay? So it doesn't matter if you divide something, any sankhya, with 1, it remains the same. Okay? So if you are reading a paper or somebody is talking and he's saying, we have read a study in British Medical Journal and smokers plus diabetics plus hypertensive have a relative risk of 5 for getting corona. Okay, so you want to interpret it. How? So you interpret by this mental math. I will divide in my mind, I divide by 1. Meaning, so if the baseline risk, this was with diabetes, with the smoker, with hypertension, okay? If the baseline risk is 1, if the baseline risk is 1, getting that corona becomes 5 times more common compared to baseline if I have those factors present, right? So this is another way of interpreting the relative risk. Do a mental math, divide it by 1, and if 1 is the baseline risk of that event, that disease, then 5 times increase is the risk in presence of all those factors. So there's a very quick way of interpreting. Divide by something by 1, and 1 is the baseline risk without the factors, without blood pressure, without diabetes, without old age, then risk is 5 times. अगर किसी ने कहा relative risk vaccination trial का 0.1 है, तो I know, I do a mental math, I can divide by 1. 0.1 माने क्या हुआ कि अगर रिस्क इसका 10 है तो ये 1 है, माने 1/10 हो जाता है, so I am being protected. So I will get my child vaccinated if somebody says the relative risk of immunization is 0.1. So it's protective. So do a mental math, divide by something by 1, and you get. Or other concept is 50-50. I hope that concept is clear. Now I'll just quickly go through rest of the thing, and we'll finish today's session. Thank you very much. So RR and OR give a comparative idea. See this example. In one group, the incidence of some disease say 100%. ठीक है, खांसी में सबको, जाड़े में सबको फ्लू एक बार हो ही जाता है, ठीक है, एवरीबडी गेट्स 100%. ठीक है, अच्छा 50% इन द अदर ग्रुप. अगर आप फ्लू की वैक्सीन, फ्लू शॉट्स आजकल बहुत फैशन में चला है, फ्लू शॉट लगवा दे, ठीक है, उसमें मान लीजिए 50 को जुकाम होता है, ठीक है, तो 100 over 50 कितना हुआ? 2. ठीक है, अगर कोई कहता है 10% में कोई डिजीज होती है एक ग्रुप में और दूसरे में 5 होती है, 10 over 5 तो भी 2 है. अगर कोई कहता है 1% में होती है एक ग्रुप में और 0.5 तो भी 1 over 0.5 2 है. ठीक है, तो रेशियो वही आ रहा है 2. तो जस्ट आपको सिर्फ आपने ये कहा कि रिलेटिव रिस्क हमने ये स्टडी करा है और 2 आ रहा है. इट्स नॉट गिविंग द एक्चुअल मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम. यू डोंट नो वेदर इट इज अकरिंग इन 100% और ओनली 1%. 100 गुना फर्क है इसमें स्टडी में, इस स्टडी में. लेकिन चूंकि आप सिर्फ रेशियो प्रेजेंट कर रहे हैं, वो 2 ही रह रहा है, 2 ही. ठीक है, तो मियर गिविंग रिलेटिव रिस्क
does not give the full piece of information. So always give the absolute risk. What is absolute risk? Absolute risk is calculated by taking a difference, risk in one group minus risk in other group. तो risk एक ग्रुप में 100 है, तो so absolute risk, or also called risk difference. Difference in the two groups, बहुत easy to understand. So risk in one group minus risk in other group. तो अगर एक में 100 है, दूसरे में 50 है, तो 50 हो गया, ठीक है. अगर एक में 1 है, इसमें 0.5 है, तो ये 0.5 हो गया. तो यहां पे एक्चुअल मैग्नीट्यूड आपको मिल रहा है. यहां पे 50 डिफरेंस है और यहां सिर्फ 0.5 का. तो आई विल चूज दिस थेरेपी इफ आई हैव टू डिसाइड बिटवीन टू थेरेपीज. आपके पास दो ऑप्शन है. इस पेशेंट सिक है, सीरियस है, आईसीयू में है, उसको ये वाली एंटीबायोटिक दें कि ये वाली वैक्सीन दें कि ये वाली दें. आई विल चूज दिस because actual magnitude of difference between the disease and protection is 50%, here 0.5%. ठीक है. तो एब्सोल्यूट रिस्क और रिस्क डिफरेंस जरूर कैलकुलेट करिए, सिर्फ रेशियो मत कैलकुलेट करिए, दोनों दीजिए. यू हैव डन सम स्टडी, ऑलवेज गिव द रियल वैल्यू डिफरेंस, also called absolute risk, which is the difference between the two groups. Okay. और उसी से एक कॉन्सेप्ट आती है जो रैंडमाइज ट्रायल्स में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसका नाम है नंबर नीडेड टू ट्रीट. Number needed to treat. Number needed to treat is calculated by 1 upon that absolute risk. 1 upon, उसको हाँ साफ करिए. तो whenever we do a good randomized trial, the editors of a good paper, like journal like Lancet, British Medical Journal, NEJM, they will ask you to compute the number needed to treat. Number needed to treat. अभी क्लास चल रहा है. I'll talk in 1 minute. ठीक, thank you. Sorry. So I need some volunteer. कोई कैलकुलेटर लेके कोई आ जाए. कोई आ सकता है? हाँ मैडम आ जाए. ठीक है, ठीक. ओके, तो हमने एक स्टडी करी. We have done a study and our risk difference. So risk in one group 1, risk in 1 is 50%. Risk in group 2, so there are two treatments, right? 2 antibiotics, example, or 2 drug regimen for say tuberculosis. इसमें 20% या 25 कर देते हैं, चलिए easy हो गया. 25%. So how much is risk difference? 25. Risk difference. $50 minus 25. 50 minus 25. Okay, that is 25%. Ab, madam, we have to calculate the number needed to treat. So number needed to treat is given by the formula NNT is 1 upon reciprocal of the risk difference. Reciprocal of the risk difference. Okay. So this is 1 upon risk difference कितना है? 25. अब ये कैलकुलेट करिए. 0.04. जी सर. ओके. अब बिकॉज इट इज इन परसेंट, इसको 2 0 हटा देते हैं, 4 हो गया. ठीक है. सो 4 इज द नंबर नीडेड टू ट्रीट. तो हाउ डू वी इंटरप्रेट दैट 4? We interpreted, suppose the outcome was cure. So in order to cure one extra patient, in order to save one extra life in ICU, I have to treat 4 patients by this drug compared to the other drug. Okay? Oh, Manisha ji. In order to cure one extra life or cure one extra patient from something, I have to treat 4 patients to get this difference. That is called number needed to treat. Suppose we have 2 examples. One drug gives 4 and other gives NNT बराबर 50. एक में 50 पेशेंट ट्रीट करने पे तब एक्स्ट्रा एक लाइफ सेव होती है, और एक में सिर्फ 4 पेशेंट क्योर करिए
और ट्रीट करिए और एक में लाइफ सेव होती है, तो आप कौन सी थेरेपी यूज करेंगे? 4। ओके, सिर्फ 4 पेशेंट करने में एक क्योर हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे 50 करेंगे तब एक क्योर होता है. So I'll choose this. It's more effective regimen. So number needed treat is used by doctors, by clinicians, especially for treating sick patients, to choose a particular therapy. Lesser the NNT, lesser the number needed treat, the better, the more effective the treatment is. It can also be used to decide number needed to harm. Suppose the antitubercular drugs, streptomycin, causes ototoxicity or nephrotoxicity, or cisplatin causes nephrotoxicity, gentamicin causes nephrotoxicity. So if nephrotoxicity is the outcome of some therapy, high dose of gentamicin de rahe hain, cisplatin, so number needed to harm, how many more patients I treat to get one harm will be called number needed to harm. So you can use as number needed to treat or number needed to harm, but it is 1 upon the risk difference. That's the way we calculate it. Okay, I think we'll stop here. Thank you very much, and I hope you like this. So in short, just to summarize, we can present the effect of a drug or treatment, the association, as in terms of ratio scales, as risk ratio and odds ratio, or in measures of absolute difference, absolute magnitude as risk difference. And in summary, we should be representing the data of your study both in terms of absolute risk difference as well as the ratios. And these are the real measures of effect. Don't interpret the value of a therapy by p-value. P-value is only giving you the probability that my result is by chance. It has nothing to do with the actual effect. Actual effect is presented by risk or probability or odds, difference as well as ratio. Thank you. We stop here. Thank you very much. If there are any questions, please bombard me. Can this calculation be applied for study? Ji sir? Can this be applied for study? Yes sir. Yes sir. Can this Sir. Treatment or non-treatment number, the two drugs. Yeah. Can we apply the same to the studies also? Studies, suppose the research study. Yes, we have to. We have to. If you have done any follow-up study where you have calculated number of people who are alive at the end of a study, or who are getting cured, or who are getting some harm. If we take example, here we have Dr. Ushma, I think Dr. Ushma from physiotherapy. So she is treating, say, patients with arthritis knee, for example, right? And she has applied 2 types of therapies. One is, say, some type of exercise, aerobic exercise. Other is doing, say, laser therapy, for example, right? Or TENS application. So she can calculate what is the benefit by number needed to treat. Just in treating 5 patients with arthritis, she gets 1 cure by, say, laser. So she'll say laser is better. Okay. And similarly, you can calculate harm. So all clinician must calculate relative risk and NNT. Also, whenever we present a study or thesis or any paper, they ask us how you have calculated this population. Yes, so we have to calculate risk as well as number needed treat and risk ratio as well as. Thank you, sir. Any other question? Any question from dental sciences? No? Thank you very much. Thank you very much. See, same concept apply to all fields of healthcare, whether it's dental or pharmacy.